Hi everyone, good evening. Let's wait for 5 minutes. How is everyone? Event listener, Pratiksha, Sairam was trying to do it using event listener. Maybe he was trying to refer some other notes or something. तो वो वैसे नहीं करना था. नॉर्मल मतलब इवेंट लिसनर का जरूरत नहीं है उसमें कोई भी. इवेंट लिसनर टिपिकली हम लोग यूज भी नहीं करते. श्रद्धा, आई हैड नेटवर्क इशू. ओके ओके ओके, ठीक है, 1-2 मिनट रुको. वी विल स्टार्ट विद टुडे सेशन आल्सो.
एक मुझे ना एक थोड़ा एक ना कुछ तो इश्यू आ रहा है, मेरा ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। मेरा 2 मिनट खाली थोड़ा पेशेंस दो मुझे, मतलब 2 मिनट थोड़ा टाइम दो। काउंटर इंक्रीमेंट बाय ओनली वन वैल्यू फॉर सिंपल लूप। प्रतीक्षा में समझा नहीं। नॉट नीडेड इवेंट लिसनर, हम लोग को आगे यूज भी नहीं होगा, सो रिलैक्स अबाउट इट। ओके, सो गाइस जावास्क्रिप्ट में आज तक हम लोग ने जो भी किया है, वॉट एवर वी हैव डन, वो मेरा थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग का इशू हो रहा है, पर वो हो जाएगा सॉल्व। मैंने उसको क्या बोलते हैं, अपडेट को मैंने निगेट किया है। एक थोड़ा एक 5 मिनट लग सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा लॉजिक जो है एक बार बात कर लेते हैं उसके बारे में। सो आपको लाइक वाइल वर्किंग जावास्क्रिप्ट, आप मुझे आपके एंड से मैं समझना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज गुड, व्हाट डू यू थिंक इज बैड। आपको क्या अच्छा लगा जावास्क्रिप्ट में, क्या अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, समथिंग दैट यू वांट टू लाइक अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, जरा प्लीज मुझे बताओ। आई विल लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा जावास्क्रिप्ट के बारे में, प्लीज टेल मी। कुछ भी हो सकता है, इट इट माइट बी समथिंग वेरी सिली कि सर ये थोड़ा सा सिंपल लगा, ये वाला कंसेप्ट बहुत यूजफुल लगा, जो भी वॉट एवर। बिकॉज जल्द ही हम लोग जावास्क्रिप्ट से थोड़ा दूर जाने वाले, ठीक है। बताओ मुझे, फटाफट बताओ, सब लोग मुझे बताओ। साई राम, वैष्णवी, प्रतीक्षा, आकाश, श्रद्धा, मानसी, अभी आप लोग रेगुलर, हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हो आप लोग अभी। आई थिंक एवरीवन इज अ पेड मेंबर। सो चलो बताओ। डॉम मैनिपुलेशन, डेटा टाइप इज नॉट गुड। हाँ, यानी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से आई थिंक इज, इसमें डेटा टाइप फिक्स नहीं होता है ना, आपको जो मन मर्जी चाहे वैसा डेटा टाइप ले सकते हो। तो उसको एक टेक्निकल डेफिनेशन होता है, मालूम है क्या? उसको बोलते हैं वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। Java is a strongly typed language and JavaScript is a weakly typed language. तो वीक लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का ये अंतर होता है, ठीक है। नाउ दैट इज वैलिड, आई थिंक आई विल से यस, एब्सोल्युटली ट्रू। बट उसमें लाइक आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड, साईराम, क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग इन अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज? आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग, कैन यू एक्सप्लेन? So always remember, you should be able to like explain sort of ki, हाँ sir, this is the reason why I think it is good, I think it is bad or whatever. वो क्यों, why is a very important question. So please tell me. Go ahead, चलो मुझे बताओ। सिंगल डेटा टाइप ऐसा बिल्कुल नहीं है मानसी, दिस इज वेयर वी मेक मिस्टेक एज जावास्क्रिप्ट लर्नर्स।
It is not like this, that there is only one data type. No, 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 you are getting it wrong. There are all the data types in JavaScript. You don't have to write them as a developer. That is the huge difference. So there are, like, whatever normal data types that we use, for example, we use a int or a string or whatever you might use. All of those data types do exist in JavaScript. Absolutely, they do exist. The only difference here is you don't have to define the type of data. Basically, I will say like this. When I say you don't need to define, what do I actually mean by it? When you do not need to define the data types, what happens there is JavaScript will automatically understand what the derived data type is. Meaning, if the data type which you want is, let us say, string or int, it will automatically do so. Are you getting the point? So yes, JavaScript is a weakly typed language. You are absolutely correct about that. But it doesn't mean that the language is weak, okay? By any means, by any standards, it does not mean that it's weak. Language is weak, oh my God. No, not like that. What it really means is that the language under consideration does not require the developers to give it a data type. That's the only thing, okay? Are you getting my point? Yeah, float. No. Sairam, we do have float. Okay, we do have float, but it is not called as float. It is called as a number. That's the only thing. All the data types are available in JavaScript. You will be able to get access to all the data types. Okay. There are some other problems in JavaScript which I will talk with everyone. Give me 1 minute. My problem is almost solved. I will be able to share now. Okay, let us understand. There is something which is called as version control. So let me ask you a very simple question. Okay, I'm going to share my whole screen now. Every language will have different versions, right? So JavaScript also has many versions. So many versions are there in JavaScript. Okay. The problem with JavaScript is you have different browsers. So let us say Google Chrome. You have Mozilla Firefox. Okay. You have Safari. And you have Edge. Okay, let us say these are the 4 most popular browsers. First of all, let me ask, is my diagram visible to everyone? Good. Okay, now this is where we are really starting the advanced web technologies. So I really want everyone to focus. So we have all these browsers, right? Now, what is the most important advantage of Java? Forget JavaScript. Only tell me Java. What is the biggest advantage of Java? Anyone? Platform independence, have you heard? Java will execute on all the different OS, all the operating systems. Java will work. Java will be able to run. I hope everyone knows this, right? Platform independence. Yes or no? Quickly, please. Sorry for the noise. Everyone knows, no? So platform independence का क्या मतलब हो गया? Let us understand. Platform independence का मतलब ऐसा है कि even if you use Windows or Linux or Mac OS or any OS of your choice, your program will execute, boss, isn't it? आपका program execute हो जाएगा, कोई problem नहीं आएगा. Yes. But unfortunately, JavaScript is not the same. So let us say if this is a piece of JavaScript code, let us say main.js.
and if I am using main.js here, okay, there is no guarantee that main.js will run the same on Google Chrome also, Firefox also, Safari also, and Edge also. There is no guarantee at all. Okay, no guarantee. So JavaScript is not platform independent. This is the worst thing about JavaScript. There are a few functions which don't run. You have to check for the browser compatibility. Okay, because of this problem, we have a concept called as TypeScript. Let me explain. Okay, so JavaScript has many versions, right? Point number 2. Wait, not here in heading. Let me put it this way. Issues of JavaScript. The first problem of JavaScript, not platform independent, which that is doesn't guarantee same output on all browsers. Okay, so JavaScript is not independent. It doesn't guarantee output on same browsers. To solve this issue, we have something called as ECMAScript, which is let us say JavaScript Pro. But same issue as above, meaning even ECMAScript is not platform independent. So first there is JavaScript. A better way to write JavaScript is ECMAScript. ECMAScript is nothing but a modern syntax in JavaScript. Okay, so for example, where X, you will not use, you should use const X, or there is a lot of things in async await, calling JavaScript APIs and stuff like that. So many things are there. Okay, in order to solve all these things, the developers introduced something called as a TypeScript. Now pay close attention. Okay, let us say if this circle is JavaScript and the other circle is ECMAScript, then TypeScript is such a circle which envelops both. Okay, it's a funny diagram, I know. It looks like a froggy eye or something. This is called as TypeScript. Very, very important. So what is TypeScript? TypeScript includes both JavaScript and ECMAScript. मतलब JavaScript में लिखा हुआ कोड भी TypeScript में चलेगा, ECMAScript में लिखा हुआ कोड भी TypeScript में चलेगा. यहाँ तक समझा क्या सबको? Is this clear first of all? Okay, now ये चलता कैसा है? बहुत ही सिंपल है. Instead of making main.js file, we will create a main.ts file. Is this difference clear? हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे ही नहीं, हम लोग खाली क्या बनाएंगे? main.ts टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे. टाइपस्क्रिप्ट. ओके, टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाने के बाद इसको हम लोग को कंपाइल करना पड़ेगा यूजिंग अ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर. बॉस वेरी सिमिलर टू जावा. देख, जावा का फाइल है, उसको कंपाइल करना पड़ेगा. पाइथन का फाइल है, उसको कंपाइल करना पड़ेगा. सी शार्प का फाइल है, उसको कंपाइल करना पड़ेगा. सिमिलरली टाइपस्क्रिप्ट के फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाइलर? टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर. द आउटपुट ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इज गोइंग टू बी, कैन यू बिलीव इट, JS. ओके, अब ये करके हमें क्या मिला? बहुत सारी चीजें मिली. नंबर 1, डेटा टाइप्स. नंबर 2, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नंबर 3, टाइप सेफ्टी. टाइप सेफ्टी का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कैसा, आई जस्ट हैव टू राइट वैर. वो वैर का नंबर के जगह स्ट्रिंग आया तो इज देयर एनी वे फॉर मी एज अ डेवलपर टू नो
मेरे को पता ही नहीं, डेटा टाइप ही नहीं है। तो मैंने अगर A+B लिखा है और A में 100 के जगह पे डॉट आ गया, स्ट्रिंग आ गया, तो पूरा कोड गलत हो जाएगा। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, इसमें से जो जावास्क्रिप्ट निकलता है ना, इट विल प्रोड्यूस ए कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट। कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट यानी अगेन गारंटी नहीं है कि सब ब्राउजर पे चले, बट 99.99% ऑफ द टाइम्स हमारा जो जावास्क्रिप्ट है ये वाला, वो सारे ब्राउजर पे चल जाएगा। ये सबको समझ में आया क्या? हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट का, बहुत ही सिंपल है टाइपस्क्रिप्ट। ओके, so first thing that you should do is you have to install TypeScript somewhere. You just have to search for install TypeScript, बस इतना ही सर्च करना है। ओके, ये वेबसाइट पे जाना है, ये सब बोलेंगे TypeScript कैन बी इंस्टॉल्ड थ्रू एक्सटेंशन npm ब्ला 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 ब्ला। सो हम लोग Node.js यूज करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज यू हैव टू इंस्टॉल Node.js। कैसे इंस्टॉल करना है Node.js? अरे nodejs.org, ठीक है, Node.js, ये देखो, ये यहां से जाके डाउनलोड कर देना है। क्या डाउनलोड कर देना है? Node.js को डाउनलोड कर देना है। सेकेंड थिंग टू डू इज Node.js को डाउनलोड करने के बाद इफ यू जस्ट चेक node -v, वो आपको बताएगा कौन सा Node.js है। सो मेरे पास 20 है, सो दैट्स ओके, ठीक है। वंस यू इंस्टॉल Node.js, आपको खाली एक लाइन का कोड लिखना है, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये मैंने चैट में डाला है। बस इतना सा एक लाइन का कोड अपने को रन करना है, 1 लाइन ऑफ कोड। वो रन करने के बाद जब आप टर्मिनल बंद करके नया टर्मिनल अगर खोलोगे, इफ यू जस्ट राइट tsc-v TypeScript कंपाइलर, आई एम यूजिंग 5 वर्जन, व्हिच इज ओके। वो हर महीना हर साल कुछ ना कुछ नया आते रहता है, सो दैट्स ओके। इज दिस क्लियर? यहां तक समझा क्या सबको? ठीक है। So now under UI basics, I am going to create a new folder. I am going to call it TypeScript. Very, very important. TypeScript में पहले देख लेते हैं oops basics. ठीक है, oops basics क्या है? कितने लोगों को जावा थोड़ा थोड़ा आता है? क्लास, ऑब्जेक्ट, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। ओके, डोंट वरी एट ऑल। थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ये। ओके, oops basics, let us understand। एक फाइल बनाते हैं हम लोग, oops.ts। एक्चुअली एक अलग अलग फाइल में ही रखते हैं, सो दैट इज बेटर। 1 सेकेंड। एक क्लास बना लेते हैं ना हम लोग, student.ts। एक मैंने क्लास बना लिया। क्लास कीवर्ड से क्या होगा? कॉमन सेंस, एक क्लास बनेगा, क्लास स्टूडेंट। जनरली हमको कैपिटल रखना चाहिए, फाइल का नाम स्मॉल में रखना है, क्लास का नाम कैपिटल में रखना है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने लिख दिया आईडी, हर स्टूडेंट का क्या होगा? रोल नंबर होगा ना, रोल नंबर कोलन नंबर। देखो डेटा टाइप्स आ गया, आया कि नहीं? दिस इज टाइपस्क्रिप्ट, दिस इज नॉट जावास्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज टाइपस्क्रिप्ट। सिंपल सिंपल थिंग्स वी आर डूइंग। अंडरस्टूड? सो आई हैव गॉट दिस क्लास स्टूडेंट, इट हैज अ रोल नंबर। अब और भी चीजें उसमें ऐड कर दो। स्टूडेंट का नेम स्ट्रिंग होता है, हमेशा स्मॉल स्ट्रिंग, कैपिटल स्ट्रिंग को यूज नहीं करना है, स्मॉल स्ट्रिंग। मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। सो फ्लोट भी यहाँ पे नंबर ही होता है। सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स? नंबर, नंबर के अंदर सब कुछ आ गया, इंट, फ्लोट, लॉन्ग वगैरह सब। बुलियन, बुलियन इज ट्रू फॉल्स ना। सो फॉर एग्जाम्पल इज प्रेजेंट इज बुलियन।
Marks is number, name is string, roll number is also number. Jiska whatever you like you can keep. Is present is boolean. Understood? Now I do not have anything called as main function in TypeScript. We don't have it. Okay, we don't have any such function. If you want to create a class of student S1, so S1 is a student which is equal to new student. Is this understood what we are trying to do? So it will say cannot assign student because it's a class. I have to give it a variable na. So variable student1 uska data type kya ho gaya? Student class. So for a data type you always use a colon. Okay, now in some cases let us say you have some variable x and you don't know what is going to be the data type, so just write any. Any means any of the data type will come. String, number, float, boolean, something will come. Okay, something will come. So any is called as a derived data type. कौन सा भी आ जाएगा उसमें. So variable s1 we have created this object. Okay, console.log s1.roll number. Okay, I'm just printing that. I'm just printing it. Now let us open this. Let us open a terminal here. Let us say cd oops basics. Okay, I cd'd my oops basics. Now what I can do is TypeScript compiler name of the file .ts. It will generate. Can you see this JS automatically it created? I did not do this, right? Guys, yes, no? How to compile? TypeScript compiler name of the file .ts, tsc. If I open this, you will go mad. This is JavaScript. This is real JavaScript. Look at this. How horrible it looks like. Where student equal to @class function student return student. Oh my God. Don't even take a look at it. But this is the TypeScript. Now how to run this? Node student.js. Guys, while executing, you need JavaScript. While compiling, you need TypeScript. So what did you get answer here? Undefined, which is right because you did not give it any value. Please remember and don't forget to watch the recorded lecture tomorrow before coming to class. What is the lecture? TypeScript basics. Today and tomorrow we will work on this. Then we will go with Angular next week onwards. Okay. So again, I'm repeating. TSC TypeScript compiler class name .ts. Compilation के टाइम पे क्या यूज करने का एक्सटेंशन ts और रन करने को क्या कमांड है node class name .js. तो रन हो जाएगा. See, there is no main function, nothing is there. समझा क्या? Now why is the value undefined, garbage value? Because we are not using any data. So एक बात बताओ, थोड़ा सा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मालूम रहेगा ना. If I want to give some value to my variable inside the class, what concept is used in oops to give a value to a class? Anybody? Have you heard of constructor? Anyone? Constructor सुना है क्या पहले? है ना? कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं? टाइप स्क्रिप्ट में बहुत आसान है. आप पागल हो जाओगे देख के. देखो, अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाने का है ना, तो खाली कंस्ट्रक्टर लिखो. सेम एज क्लास नेम इज इन जावा. करेक्ट मानसी? बट ये तो उससे भी इजी है. राइट कंस्ट्रक्टर इफ यू वांट. सिंपल. ये ज्यादा सिंपल है ना. Everything is small here. Constructor C is small. Now in this constructor, what you can write is roll number equal to 0. Now guys, tell me, आपको this मालूम है कि नहीं मालूम है? Object same as class name. Current object of the class. Bas. Inside the class also you have to write this. Now if I
make any changes to the code, make sure to compile it, make sure to run it, you get the value 0. Is this clear? So similarly, along with roll number, what I can write, this dot name is empty, marks is also 0, is present is false, is true, for example. ठीक है? अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी बना सकता हूँ, फंक्शन। तो गाइस मेरे को एक बात बताओ, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग? व्हाट इज द सिंटैक्स टू राइट अ न्यू फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? वेरी सिंपल क्वेश्चन। फंक्शन नेम साईराम, वेरी गुड, वेरी गुड। बट वन स्लाइट डिफरेंस, अगर तुम लोग एक क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे हो तो सिर्फ फंक्शन का नाम देना है, डिस्प्ले डिटेल्स और व्हाटएवर, डिस्प्ले स्टूडेंट। समझा क्या? अभी फंक्शन नहीं लिखना है। फंक्शन कभी लिखने का? इफ यू आर आउटसाइड अ क्लास, लेट अस से फंक्शन फू, सम फंक्शन इज देयर, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्लास के बाहर ग्लोबल कुछ लिखा तो फंक्शन लिखना है, क्लास के अंदर लिखा तो डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले वाला जो क्लास के अंदर है उसको फंक्शन नहीं लिखना है। तो डिस्प्ले स्टूडेंट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, वो यहाँ पे कर सकते हैं ना, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, समझा क्या? कितना सिंपल है ना टाइपस्क्रिप्ट, कितना मस्त लग रहा है, एकदम जावा जैसा ही लगता है, ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू जावा, और जावा से बहुत ज्यादा इजी है। बस रिमेंबर करो, एवरी टाइम यू मेक अ चेंज यू हैव टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। आप लोग यहाँ से भी रन कर सकते हो, कोड रनर करके रहता है, यू कैन like you can run from here. I have not installed that extension, but you can have an extension called as code runner, है ना? कोड रनर करके होता है टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है? कोड डिबगर इज देयर, easy runner is there, there are so many things, TypeScript pack is there, like 100 things are there, so whatever you like you can use. Code runner I am already written here, see, okay, but I like to create it myself. So what I will write, tsc sorry, let me go back to that directory. tsc student.ps node student.js, ठीक है ना? ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले कर लो, अगेन कंपाइल एग्जीक्यूट, आया ना सेम वैल्यू? ओके, एनीवन, एनी डाउट? ये ब्लैंक आया बिकॉज स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अपन ने ब्लैंक रखा है, अंडरस्टूड? कोई भी डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है क्या? सिंपल है ना, मस्त एकदम सिंपल क्लास बनाने का। सर कैन वी गिव? एब्सोल्युटली यस, we can directly write like this, but it's a bad practice, ऐसा करते नहीं है experienced developers. You can do this, but generally you should not do this, ऐसा नहीं करना चाहिए, it's very bad practice. अच्छा, one more thing, you will find it shocking, I don't find it shocking, but you will find it shocking. How many semicolons do you see in the class, in the program? कितना semicolon है? हाँ, 0. So semicolon is not compulsory, okay? अगर आप लोग सेमीकोलन डालते हो तो भी कोई एरर नहीं आएगा, नहीं डालते हो तो भी कोई एरर नहीं आएगा। बहुत कूल है ना लैंग्वेज गाइस, ये जेन जी लैंग्वेज है ना, आप लोगों को थोड़ा वाइब मैच करता रहेगा ये लैंग्वेज आप लोगों के साथ। डालना है डालो, सेमीकोलन नहीं डालना है मत डालो, खुश रहो, चिल्लाओ मत,
डिफिकल्ट है, बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट सबसे सिंपल लैंग्वेज है दुनिया में। ओके, सो माय थियरी इज डोंट पुट अ सेमीकोलन। अगर कंपलसरी नहीं है ना तो वो सब काम नहीं करने का, जो कंपलसरी है उतना ही करने का, उससे एरर्स कम हो जाते हैं। इज दिस क्लियर गाइस? एब्सोल्युटली। ये सब समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? मैं ये कोड अभी फिलहाल अपलोड नहीं करूंगा, ये मैंने भेज दिया है चैट में। अब आप लोगों को क्या करना है मैं वो बताता हूं, ठीक है? बहुत ही बेसिक काम करना है। स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल node.js from nodejs.org. Step number 2, install TypeScript. How to install TypeScript? By using command. Which command I have already shared in the chat, पर मैं वापस एक बार लिखता हूँ, npm install -g TypeScript. Okay. Third, create a file with extension student.ts. Question number 4, follow the program. Understood? Step number 5 आपको क्या करना है मैं बताता हूं. Similarly, you have to create a class to store information about a book. Assume proper data types, create multiple book objects, but hard code the values. Don't take input from user. Okay, I have specified here. Look at this, look at this, look at this, look at this. I've pinned all of this. Okay. Now something very important. मैंने इसमें क्या बोला है? यूजर से इनपुट मत लो। पता है ऐसा क्यों बोला यूजर से इनपुट मत लो? क्योंकि हमारा इनपुट HTML पेज में से आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? Our input will come from HTML page, not from a system out println or scanner. Please start working on this ASAP.
Guys, run हो रहा है क्या? Very good, Sairam. Very good, Akash. What about others? Manasi, Vaishnavi, Pratiksha. Very good, Manasi. Very good. So try to do such simple tasks. कुछ pending है तो फटाफट complete करो. I am still here for next 10-15 minutes. कुछ है तो पूछो.
Okay, good night everyone then. See you tomorrow. Thank you for coming. Akash is saying I have created a class with name book. It gives me this error. Duplicate identifier book. अरे कुठेतरी परत बनवला असेल. Book.js. Don't open the TypeScript and the JavaScript file at the same time. Okay. Counter program. Pratiksha, remind me tomorrow when I start the session. Okay. Definitely we will see. अभी time कम पड़ेगा रे. 5 मिनट ही बाकी है. See you. Good night. See you tomorrow. Pratiksha, मला remind करा उद्या.